Is Naveen sir there with us? Just a moment. राबिन जी, जस्ट एक मिनट सर। ये रिकॉर्डिंग की परमिशन देंगे क्या? सर रिकॉर्डिंग मैं खुद करूंगा यहाँ से, तो मैं आपसे लिंक शेयर करूंगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। यस Yes, sir. Yes. We are live on Facebook. Yes. Just 1 second. Yes, Shri, please start. Okay. A very good morning to one and all. At the very outset, warm greetings of the day. Leadership and learning are indispensable to each other. Learning, and the most beautiful thing about learning is that no one can take it away from you. Learning is an experience, and everything else is just an information. Honorary Chief Guest, Dr. Naveen Kumar Mehta, Associate Professor at Sachi University of Buddhist Indic, Raisen MP. Our esteemed guest of honor, Dr. Naveen Narang, Managing Director, Vishisht School of Management. Our respected director, sir, Dr. S.M. Anas Sekhpal, Director, Vishisht School of Management. Our young and dedicated staff members and all the dear participants. I, Professor Yashri Dubey, feel privileged to welcome you all to the Value Addition Certificate course on communication skills. Benjamin Franklin has said, "Tell me and I forget. Teach me and I may remember. Involve me and I learn." We at Vishisht School of Management are dedicated towards building a better future for our students. And this certification course is seeing the light of the day because of the dedication, the visionary approach, and creativity of our director, sir, Dr. S.M. Iqbal. As we all know, in competitive and continuously changing world, the effective communication skills is playing a major role in the overall development of an individual. So that is the reason we came up with this program wherein you will come across various aspects of communication skills. And I sincerely hope that after the completion of this certification course, you will become a better version of yourself and will be able to add some meaning and value to your existing knowledge. Now, taking our program further, I would like to request Dr. S.M. Anas Iqbal, Director of Vishisht School of Management, to please present the welcome address. So please. Thank you, Ashri. A very pleasant good morning to each and everyone. Chief guest of this session, Dr. Naveen Mehta, sir, my faculty colleague, and my dear student. I feel honored to welcome guest of this session, Dr. Naveen Mehta. He is an eminent scholar, he is an eminent academician, administrator, and well-known personality in the field of communication skills. I warmly welcome all the participants, all the student participants, because I think it's a good opportunity to grab that you join this particular program on 7 days. It will run on 7 days. It's a kind of value additions in the communication skill program.
As we all know that communication skill is a very important part of our life, whether it's a personal life or is a formal life. Because this is the only mode of transportation of our communication, our thought, our expressions, our views from one person to another one. If we are lacking in this particular field, that we are not in condition to communicate our thought, our views to other parts, means other people, set of people, group of people, other persons, then we have to be stand on the backside. Um, Whether it's play a very crucial role in our personal life itself, because always says if there's a communication gap between your life partner, your own relationships, whether with the parents, with the brothers, mothers, and any members of your family, uh, some kind of this problem create always. Likewise, this communication skill plays very important role in developing the personality of anyone, because in official skills, the writing skills, if anybody have a good writing skill, then can do better way in a official work. And if a person is very good in oral communication, is a good orator, a good thinker, and that attract the people. इसलिए लीडरशिप में हमेशा कहा भी जाता है कि अच्छा नेता वही है जो जनता को अट्रैक्ट कर सके, and there is a communication plays an important role. So today we have with us a very renowned personality in this field. So once again, I, on behalf of entire Mrs. family, welcome you all. Welcome our chief guest, Dr. Naveen Dr. Naveen Mehta, sir. Thank you so much for joining this session as a chief guest of today's morning. Thank you so much. Thank you so much, Dr. S.M. Anas Iqbal. I must say this is all because of your motivation and dedication. That is the reason we are able to come up with such programs. So yeah, thank you once again. So now with the utmost joy and pleasure, I would like to introduce our chief guest to you all, Dr. Naveen Kumar Mehta. He's presently working as Associate Professor, Department of English, School of Language, Literature and Arts, Sachi University of Buddhist India Studies. He is former dean and head of Sachi University. He has more than 15 years of research, academic, and teaching experience. He has been awarded by the Prime Minister of India and Ministry of Human Resource Development of India on account of his meritorious and outstanding academic career. He has been elected as a Fellow of RAS Career Britain and Ireland, January 2013, and senior member of the International Economic Development Research Center. He is a UGC NET and SLET qualified as well as triple postgraduate in business management, education, and English literature, and awarded PhD in the areas of Indian writing and English literature, management, and commerce. He is also conferred with honorary delete, and he holds certificate in teaching English from CIEFL, Hyderabad. He is felicitated by then President of Institute of Chartered Accountant of India, New Delhi, CA Ved Jain, on the occasion of Teachers' Day, 5th September 2008, for his excellent teaching skills. He has been awarded and adjudged Best Paper Presenter in national and international seminars and conferences. He has authored several research papers, articles on English literature, language, education, and management related themes. He has also authored and co-authored 2 books. So we are really honored and delighted to have you with us, and I'm sure your presence will definitely motivate our students. So now I would like to request Dr. Naveen Kumar Mehta to please share his words and experiences with all of us. So please. Dr. Naveen Kumar Mehta, sir. Good morning to one and all.
I'm really thrilled, honored, and it's my privilege to be in my, this particular extended family of Vishisht Parivar. I'm really thankful to Dr. Professor Anas Iqbalji and his very dedicated team members for providing me an opportunity to interact with young, ignited minds of India. All the participants, you are studying in your different streams. I hope, as it was rightly said by none other than you are very lovely, very motivated, highly spirited director, Sir Iqbalji, that no communication, no life. You cannot hope to live in this world without communication. I think communication is the key through which you can unlock, you can open the doors of your success. So being a teacher, being a scholar, being a student, what I feel that communication is everything. In Sanskrit, it is well said, Vacha madami madhumat, that it is sweetness of your words, it is sweetness of your communication that makes you to be popular among others. You are known through your communication. So communication is something which is very vast. And to cover this vast area in 7 days' time, let me again congratulate the organizing committee that they are very much, aware about your career growth, career prospects. Therefore, Professor Iqbal and his team, I think they decided to cater to your requirement. And then they decided to go ahead to hone, to improve your latent skills. Well, communication is something that can be done in any language. Let me be very honest. A few days ago, I was taught by your very lovely Kunal sir, French language. Kudos to Rabin Nimaji, Anju madam, Patel madam, that they gave us an opportunity to learn that language. So language is something which can be considered a means through which you can communicate. So I'm not specific here that if I'm speaking in English, so this is communication. This is very wrong perception of ours. Whenever we talk about communication, what we think? You see the inaugural speech of or welcome speech of Professor Iqbal. He used Hindi also. It's not something which is only related to language English per se. It's any language in which you find yourself comfortable, convenient, conversant, you can communicate. And you are on the top of your world. Pay attention, my dear students, on my words. You will be on the top of your world, on the top of your career, if you can communicate effectively. So let me begin presentation. I don't believe in being a traditional teacher in presentation, but since you are students, so that you can have something at the end of this presentation. Otherwise, I can talk continuously for hours and hours, and you will find it very close to your heart. That communication is not something to impress. I'm not here for any impression. Again, pay attention on my words. It's a matter of Anju madam, Rabin ji, you know very well. It's a matter of expressions, not impression. So communication is all about what? It's about expressions. How do you express yourself? Dubey madam, as she is anchoring this program, she is expressing her feelings when she was talking about me, talking about Iqbal sir. So how do you express yourself? That counts, that matters. So in Sanskrit, there is a saying again,
Guna gunekshu guna bhavanti, te nirgun prapya bhavanti dosha. इसका अर्थ क्या हुआ कि भाई अच्छा व्यक्ति तो नदी के समान है, जो नदी पर्वतों से निकलती है, जिसका जल स्वादिष्ट होता है और जिसको सभी पसंद करते हैं. तो कम्युनिकेशन इज समथिंग लाइक दैट. If you use good words, people will appreciate. People will become friends, and you will have a good, bank of appreciation. On this very cheerful note, let me begin my presentation. So, whenever you talk about communication, nowadays, since we are living in a world of globalization, and in globalized world, or even in this new normal COVID-19 situation or scene, skills are very important. So communication has become a kind of, skills. Skills are what? That you develop over the period of time. Nimaji, skills are somewhat inherent also. Innate, antarnihit. So you need to only polish them. You need to improve them. You have to work upon them. So communication is also a skill. If you don't, you can develop. How? By attending such programs, interacting with people like Iqbal Saab, Nemaji, Patel Madam, anyone who is good at communication. So people learn through only experience, and communication is not an exception to it, my dear students. So let's go ahead in the journey of communication. The first thing that comes to our mind, the concept of communication. What is all this? What does it mean? What it carries in it? So whenever you talk about communication, first thing it strikes to your mind, even to me, to anyone. Why do we communicate? What is the necessity of communication? First and the foremost, to express. That I told you also. We are human beings after all. We need to share our feelings, emotions with others. We like to interact. And this COVID has given us an opportunity, you my dear students, my dear scholars, my dear fellow academicians, to interact with each other. Kollo duniya muthi mein. So communication is something through which you can conquer this world. Better understanding of each other. Professor Iqbal was talking about family relationship, your personal relationship with your wife also, with your children also. It cannot be developed if you don't have understanding. He was very rightly in his remarks. And whenever you want to get your things done, you need communication. I want to present this particular presentation today. I have to communicate Iqbal Saab. No, sir, I will communicate. I will be definitely available on time. And that's it. To get things done, you need to have communication. And whenever you like to pass any information, like I want to pass information related to communication, I have to share. Or if I want to obtain information from Professor Nemaji or Professor Patel Madam or Dubey Madam, Panya Madam, anyone, I have to communicate. Very simple. It is the people who make, communication what complex. We make things easy or complex through our communication. Mind my words. We create troubles in our life if we have poor communication, or if we have no communication. Silence also speaks, that we will discuss. So in order to reach any decision in any affair of life, business or profession, you need communication, so that you can reach to the conclusion and you can provide a comprehensive, a cohesive decision towards the end. So I hope that till time you have understood what I am saying. Am I fast or should I slow down? No, Nemaji? sir, go ahead. Very good. Very good. So the next, which is very important, I'm not going deep into the etymology of word communication, but being
the learner of this program, you need to know what does it mean. The word communication, it has been taken, it has been originated from the Latin word communus, communius, communicare, to share, to exchange, to transmit, to transfer. What you're going to transfer, what you're going to transmit, your ideas. I have an idea that we should learn German language through Vishisht Institute of Management, which is running in my mind. I shared this idea to Professor Nema, Professor Iqbal. Sir, do you have any class in future? Sharing information also. Yesterday it happened there in Indore, something related to COVID. I am sharing this information. Thought, which is something related to your, attitude, behavior. Communication is behavioral science. It's related to your behavior and attitude. How do we assess any person? Through his thoughts, thinking. And there are many courses available on thinking critical or critical thinking. All these things are there. I hope that Iqbal sir is listening to me, and he will definitely come up with some more, thoughtful sessions in future too. Opinions. Opinions are very important in any organization, any activity. And if your opinions are valid, practical, people appreciate. They will go after your opinions, and you will be on the top. Just like Iqbalji was saying about the great leaders, orators. Their opinions are, universal in appeal. You can't deny. You can't keep them aside. Let us go ahead. So this is very famous model. Whenever you have any communication class, traditional or even modern teacher, they will talk about this particular Shannon Weaver's model of communication. Any class, even if it is a Harvard or any Oxford class or even our class like this one. This is a kind of, framework in which you have sender one hand and the other hand you have receiver. What happens in between? It is something which is, very tricky in nature. It's quite interesting also to know that it's only sender and receiver, I and you. But this I and you has got certain stages or steps. Therefore, even in family, it happens sometimes that you talk and people don't. You speak, people don't like to speak to you. You say, people forget. You speak something, they ignore that. You make eye contact, people avoid. Why? Have you understood? Have you taken care of this in your life? So I think this is the right time today. In sender and receiver, there are many things. And if you know all those things, then your communication is smooth. It's live, it's lovely, it's effective, it's impressive. So sender has to send the message to the receiver. If I say, I am Naveen, it's only, I am Naveen. 3 words are there. The whole things are there inside in it. I have to decode, I have to encode first. I am Naveen. It should be, concrete. It should be correct. It should be concise. It should be clear. It should be complete. And then I need a channel. Like I am speaking to you. Here, channel is this application through which we are interacting to each other. Then you, as a receiver, decode out of it. I means he. M means he. Naveen means the fellow who is talking to us. And then you decode. And there should not be in between any noise. If somebody is talking, somebody is. Therefore, the organizers, they unmute, rather muted everybody, so that we can reach to each other without any noise, without any pollution. There should not be any impediment. There should not be any obstacle in communication. And if you understood that I am Naveen, then you will provide immediate feedback. I am Robin. I am Kunal. This is beauty of communication. So what does it has got in it that makes communication holistic? What is the key term? I like to ask. Can I ask this question to the participant? Anybody has the answer about it? That
What is most important thing in communication? So that sender and receiver can and share their information. What is the key element in it? Anybody among all the participants? Please answer. Answer in the chat box. Okay, chat box. I'm not getting. Could you tell me? अभी तक तो कुछ नहीं आया है. The moment it comes, I will just. Okay, okay, okay. The thought. One of the students replied, thought. Thought maybe, but very key word is there, and that creates problem in life, The in feeling, family. What? feelings, No. Okay, 1 minute more because we are Feedback. running out of time. Feedback is correct. It's there already, but if you provide feedback, it is part of that element. so one more is motto. Not motto. One more chance I will give to my dear participants who are very active and very agile. Words, It's something I will tell you. I will tell you. Okay. I don't take. It's not an exam. Just interaction. It's understanding. It creates all the problems in the life. Sender and receiver, they should have understanding. If there is no understanding, like they are not able to understand what I want to communicate, and they won't. What do I feel? What is my immediate or ultimate feeling? Are they not able to understand me? Or my talk is so complicated they are not able to understand, or it means I'm so boring in my lecture. It offers you a layer of interpretation, but understanding should be there in your relationship also. Your wife should understand you. Your children, they should understand you. Your parent, they should understand you. And therefore sometimes we cry out, आप समझते ही नहीं हो, इनको समझ में नहीं आता है. And you like to still keep on uttering, communicating to their fellow. It's your problem that you don't understand. What does he require? What does he like to communicate? Shall I go ahead? Okay. The next, which is very important for us. 1 minute. Okay. So there are two things. Let me take you to the world of two parts of communication: verbal and the non-verbal. Let it be whatever it has been written over there. I will give you more simple to this. Verbal means with words. When I'm using words, it may be written, it may be oral form of communication. But when you talk about non-verbal, it is something which is very, very interesting and difficult at times also. What are these? Anybody? Chat box, Nemaji, please search. expressions, Yeah, very good, very good. Good going. What are these? bodily actions, Very sign good. language, Very good. Very nice. बहुत सुंदर. All are non-verbal cues. Non-verbal cues. And you will be wondered to note that 90% of our communication, daily communication, is based upon non-verbal communication. Your mother, she understands you not through verbal, through your facial expressions only. And you also understand certain, number of people, or even your kids, that ये बच्चे ने आज गड़बड़ करी, उसका चेहरा बता रहा है. A person smile and smile, still be a villain. एक आदमी जो कातिल है, उसकी मुस्कुराहट है पर वो कातिल मुस्कुराहट नहीं है, वो खुद ही कातिल है. It's a quote from Hamlet. A person smile and smile, still be a villain. So you cannot judge a person through this. Therefore, it is very complicated. Body language is something which has to be, groomed. I hope that the organizers, they will take care of this particular portion of non-verbal communication in your, and they have, I think so, in this particular program. Because in interviews, in professional world,
non-verbal communication, your sense of dressing, your, attire, even your earrings, this particular bindi sticks, your glasses, your hairstyle, your nose pin, your color of your lips, lipsticks, your rings, your tie, wearing of your tie, belt, shoes, color of your shirt, everything. All these are part of non-verbal communication. Let us be. Otherwise, what will happen? I will take the whole time, and your whole session will be disturbed. So, shall I take a few more minutes, sir, if you allow me, Iqbal sir? Yes, sir, go ahead. Okay. Let us go ahead. So, whenever you talk about communication as skills, there are four basic skills. And here, let it be. Let me explain you in a simple manner. There are four skills, understood? Out of these four skills, two are receptives, two are productives. Receptives जो हम स्वीकार करते हैं, productive जो हम produce करते हैं. So, two receptive skills are listening, and we often neglect listening as a skill. Listening कला है भाई, सुनना एक कला है. Therefore, there is a difference between listening and hearing. Listening and hearing, they look, interchangeable words, but not. Listening is something which is very, very vital in life. Poor listening, poor communication. Interview, if you are having poor listening, you will be out, thrown immediately out of the door. Therefore, listening is a receptive skill, and reading is also. Whenever you read anything, you receive certain things, receive information in printed form. Therefore, we say, किताबें तो बहुत पढ़ी है, कभी कोई चेहरा पढ़ा है क्या? भाई चेहरा भी पढ़ने लायक. So, reading is not only reading a text, it is reading between the words, beyond the words, behind the words. Therefore, you have Jacques Derrida in literature. The theory of deconstruction. Deconstruct the text and then interpret it. I don't like to go into that literary class. Otherwise, this lecture will be very boring for you. You are young people. You need something substantial, near to your heart, close to your heart. I'm trying to provide you that. Then you have two productive skills. And these productive skills are something related to production. So for production, you need some raw material. And raw material is what? Words, thoughts, opinions, information. Therefore, you see, Iqbal Sahab, people come to English teacher, especially in your college, maybe also. Sir, हमको English सिखा दीजिए. How it can be, taught? No language can be taught. There may be argument, counter argument to this. It may be highly debatable subject. No language can be taught. It can be learned through only experience, exposure. Nemaji, I may be right or wrong. You are nodding your head. You are right, sir. Thank you very much. Boss is not always right in communication. You have to always, share your experience also. So I'm really thankful to you that you shared your views. So productive skills are speaking and writing. But you need words. अरे भाई अब जब हिंदी में नहीं बोल सकते तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो क्या इंग्लिश सिखाएं आप? आपसे मैं कहूं, अभी आप कोविड-19 के बारे में बताइए, कोई भी पार्टिसिपेंट बिना रुके 5 मिनट. Until unless you don't have concrete information, absurd information, you can talk hours and hours, it has no meaning. You need something concrete, information, content. Speaking is productive skill, but it requires what? Words, ideas, thoughts, confidence, clarity, conciseness, completeness. So many things are there. I'm not going to cover all these things because time is very short. And then writing, it's again translating your ideas into words. Translating, transferring, therefore you see there are young kids, they are coming with novels, they are coming up with novels, stories, prose, and they are writing. Among, Vaishnav family, there may be some students, bright students. All the students are bright, but they may be very good, prolific writers. In your magazine, college magazine or your journal, they may be contributing a lot. Faculty also. So it's a creative something. Writing is very complex.
It is, sum total of all other skills. Reading is required in writing. If you are a good reader, then you can write. Even in speaking, you should be a good reader, good listener. I'm talking here, but I have to listen Nemaji. I have to listen Dubey madam. I have to listen Iqbal Saab. Then I should be a good reader. Until unless I don't prepare anything, I can't speak anything. Then you have to write sometimes while speaking, and speaking is itself a big skill. So let's go ahead. I don't like to go into deep right now because we are otherwise this lecture will be very long. So 4 skills: 2 productive, 2 receptive: listening, speaking, reading, and writing. LSRW. This is the acronym of this particular portion, or these skills, that LSRW, they are popularly known as. In very brief manner, I'm going to touch what is listening. It's different from hearing that I told. Whenever we hear chirping of the birds, पक्षियों की हम चहचहाट सुनते हैं, तो वो listening नहीं है. Listening में there should be an attempt to interpret. Attempt is made. Efforts are made so that we could listen to the verbal as well as non-verbal part of it. And it's very wonderful. Whenever you speak non-verbal, it goes automatically with it. Like the gesture, posture that I'm making here. Verbal along with non-verbal. It makes communication compact, effective, impressive. आपको एक उदाहरण देता हूँ. बचपन से आपने सुनते आए हैं, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी. अब मैंने ऐसी कविता गा दी, तो इसका इंप्रेशन क्या है भाई? खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी. Now you have to express like this. That virus should be there. So these are the gestures that put impetus on your verbal communication. Let me go ahead. So what are the types of skill? Active listening that you are doing right now. Very attentively you are listening to someone. Marginal listening, that you listen and you drop certain things there only. That we do whenever we talk to our friend. He talks and we, certain things drops there only. Only things which are important to us, like he may come to you and then he may say, यार वो रमेश अपन गए थे कल बाजार में, मैंने वहां जाकर वो देखा और वहां जाकर देखने पर मुझे लगा कि तेरे को टेस्ट के नंबर 10 आ. हाँ, क्या बोला तू? उसके पहले यू आर नॉट अटेंटिव. और एक बॉस बात कर रहे हैं कि भाई तुम लोगों का काम अच्छा चल रहा है, काम तुम करते रहो, कोई नहीं सुन रहा है, और उसने बोला देयर विल बी अ डिडक्शन इन योर व्हाटएवर bonus or something. Bonus, now you pay attention only. That marginal listening is very helpful at times. That keeps you to pretend that you are listening. Empathetic listening is also important. It's not sympathetic. Daya sanbhuti nahi hai. That means you are listening with understanding. You are caring, sharing a person. So these are the types of listening that we need to understand whenever we want to listen. So who could be a good listener? A way of saying. We have to make others feel and even that you are important. There is a psychology in communication, you attitude. Never impose that I, it's very important. You, if my dear participants, you are not there, I could not be here. If Vishesh family is not there, I could not be here to speak. To whom I would speak? And in communication, it is 5W and 1H rule is also there. What, where, when, how, and who. To whom I should speak? Rudyard Kipling always said, "These are my 5 masters. I always keep them with me. They help me they guide me to excel in life." So you are important. This is the output of a good listener or a good listening skill. Then you have speaking skill. Speaking is something in which you use your organs, oral organs. You can use symbols also, and you add meaning to your communication. And you directly, not attack, you directly reach to the core of the heart of your receiver. दिल में जगह बना लेता है. अच्छा है, हमेशा रहता है, सदियों तक रहता है. So there are good orators in this world,
and they will remain with you throughout your life. They may be your role model also. So to be a good speaker, you have to work really very hard. It's not something very difficult. Only human beings can achieve. Next, so being students, why be a good speaker? Why you like to be a good? Why you should you be a good speaker? Why people ask you to be a good speaker? So that you can interact with your classmates. Otherwise, you will be a shy, timid, coward type of person. And to be a coward in this voracious world, in this vocal world, it's a kind of disadvantage. So interaction with classmates, you have to be a good speaker. Then in tutorials, in classrooms, like you are responding, it's a sign of good speaker. And even seminars, workshop, like I am speaking here, Professor Nema, Professor Iqbal ji, Dua madam, you have a galaxy of good speakers in your college. भाई तारे दिन में भी होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं. रात में तो चंद्रमा आता है इसलिए दिखाई देते हैं. The stars are always there. You are stars of futures, of future of Indore, future of India, future of your society. So speak, glow yourself. And then you want to deliver a presentation. भाई मैडम ने कहा, सर ने कहा कि मैडम ने कहा, दुबे मैडम ने कि मैं आपका सबका प्रेजेंटेशन हमने दिया 10-10 मिनट सबको असाइनमेंट है. तो you should not feel that the whole world will fall upon you. दुनिया मुसीबत आपके ऊपर आ गई, पूरी कायनात और आपके ऊपर गिरने वाली है. प्रेजेंटेशन है, I will deliver my presentation in a very confident manner if I am ready for that. So good speaker is a good presenter also. And Viva OC also. You need to be a good speaker. So being students, I think you require speaking skills at the top. And if you are a professional, you need to discuss, you need to attend meetings, you need to attend conferences. Even you have to conduct conferences, seminars, presentations in business also, or even in telephonic communication. Nowadays, even you see this technology-oriented communication, and that too, speaking is required. You cannot mute yourself there. Like here, you are muting yourself. You cannot mute. Unmute yourself. Explore yourself. Then how could be you a good speaker? Certain small things that you can do. Keep following a good speaker. Keep following. You can learn not through imitation, but through certain experiences of that person. Keep right volume. You cannot be too loud. Pitch. That means inflections, emphasis. Today, like मेरा नाम विजय है. भाई वो अमिताभ बच्चन का वो एम्फेसिस है. मेरा नाम तो आपने सुना ही होगा, राज है. ये क्या है? ऑल आर मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन है. आप मेरे से अच्छा जानते हैं. नाना पाटेकर का आप देखा आपने, पीच, इन्फ्लेक्शन, एम्फेसिस. All these you have to learn, my dear. And learning cannot be done only in classroom. Outside the class, you can learn all these things. Good speakers are everywhere. अरे आप सब्जी बेचने वाला देखिए, आपको सब्जी बेच जाता है, वो स्पीकर है. अच्छा, कपड़े बेचने वाला कहता, हाँ भाई साहब यही शर्ट तो मैं पहनना चाहता था, 200 रुपए 500 रुपए आप तत्काल दे देंगे उससे. Because that fellow is a good speaker, good communicator. He says he sells what you are looking for, or what you are looking up. And there should be some pauses. Atal Bihari Vajpayee was a good speaker. Oh, he takes pauses. आपने कभी धीमी गति का समाचार सुना होगा? आज, then take a pause. Why to take pause? So that you can give room, space to your listener. He will think, आज क्या हो गया? आज क्या हुआ? कहाँ हुआ? So pauses are always important in communication. You should not become Shatabdi train. Oh, आई गड़गड़ और बाहर. Take pauses, small pauses in communication. Variety should be there, clarity should be there. I will, take too much time. Otherwise, organizers, they will keep me mute.
let me finish my lecture on time, because Dua madam is watching me very closely. Then you need good body language also, being good speaker, because people, they look at your body language. You are doing like this, you are doing like this. All these have some meaning. So being a good communicator, whenever you speak, do not become a statue. Have live eye contact, live facial expressions, smile on your face. सपोज अब आप देखिए ना, मैं तो दूर आपको एक घटना बता रहा हूँ, जैसे में समाचार रीडर आता है मान लीजिए, और वो बोलता है आज सुबह XYZ जगह में भयानक भूकंप आया, काफी लोग मर गए। आप बोलेंगे बड़ा रूड ये एंकर है, हंस रहा है। भाई गंभीर चीज है, वहां पर कर्फ्यू लगाया, वो आया है, अर्थ के ट्रेमर आया है, तो कैसे बोलेंगे? देखिए ना, आज सुबह हमें अपने सूत्रों से पता पड़ा है, बड़ी दुखद घटना हुई है। दैट ग्रेविटी, दैट सीरियसनेस शुड बी देयर ऑन। होता ये हम कई बार अगले को बुरा लग जाता। द्रौपदी वाला प्रसंग है भाई पूरा महाभारत में, मैं आपको इतना पुराना नहीं ले जा सकता, कम्युनिकेशन में जब जाऊंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि सुनते चलें। भाई वो महाभारत में क्या हुआ, द्रौपदी हंस दी और पूरा कारण मरा लाक्षा ग्रह से वहां से, और पूरा खानदान का खानदान पतन हुआ, महाभारत हो गई। कुरुक्षेत्र में क्या हुआ, गीता का उपदेश हुआ, कम्युनिकेशन दिया है भाई अर्जुन को। सारे कम्युनिकेशन के सोर्सेस हैं, हमारे धर्म ग्रंथ हैं, वो चाहे पाक कुरान हो, बाइबल हो, रामायण हो, महाभारत, वो सब कम्युनिकेशन है। वो हमें अच्छे लाइफ की ओर कम्युनिकेट करती है ना। तो आगे बढ़ते हैं। आप अच्छे स्पीकर कब होंगे? जब आपका कमांड होगी कंटेंट पर, टॉपिक पर, दबाकर बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे। आप सिद्धू को देखिए, नवजोत सिद्धू को, शेरो शायरी करते हैं, आपसे बात करते हैं, कहीं लगता ही नहीं कि कहीं बीच में कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। कपिल शर्मा क्या है, एक अच्छा कम्युनिकेटर है, और क्या है। अरे मेरे से अच्छे आप तो स्टैंड अप कॉमेडियन हो सकते हैं यदि आपका अच्छे स्पीकर हैं तो। लाखों करोड़ों कमा रहे हैं भाई यूट्यूब पे कई लोग। फिर यू कैन डू रिहर्सल आल्सो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। नवीन मेहता एक दिन का प्रोडक्ट नहीं है, इकबाल साहब एक दिन का प्रोडक्ट नहीं है, नेमा जी नहीं, दुबे जी नहीं है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे ट्रायल देयर लेवल। Overnight, nobody can become superstar. You have to work really hard day and night, and ultimately you reach to your goal, destination. Practice before the mirrors, before the friends, before the experts. चलिए मैं रिकॉर्डिंग करके देता हूँ, भेजता हूँ, आप उस पर रिएक्ट करते हैं, कमेंट करते हैं। आजकल तो हो ही रहा है। कल ही इंदौर में एक महिला का एक अच्छा मालवीय वीडियो चल रहा है, आपने सुना होगा मेरे से कई लोगों ने। तो वो क्या है, प्रैक्टिस करिए उसने कई बार, उसके बाद वीडियो लाइकिंग बढ़ेगी, फॉलोअर्स आएंगे, आपकी रेटिंग बढ़ेगी, हो सकता है आपको कुछ डॉलर्स भी मिलने लग जाए, अल्लाह का करम हो। प्रैक्टिस माय डियर, नथिंग एल्स इट रिक्वायर्स। कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, केवल दिन रात अर्जुन की तरह लक्ष्य साधित करते रहें, लगे रहें। नेमाजी पूरे इकबाल साहब पूरे 3-4 महीने से लगे हुए हैं, मांझ रहे हैं, धार शार्प अपनी जो है ना बच्चों की, उनको शार्प कर रहे हैं। कंटिन्यूअस प्रैक्टिस that will help you to reach to your goal. आगे बढ़ते हैं। रीडिंग क्या है भाई, मैं इसको यहीं रोकना चाहूंगी कि रीडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल है, और ये ऑफन निग्लेक्टेड, इट इज ऑफन निग्लेक्टेड इन लाइफ, एंड नाउडेज इट इज ऑलमोस्ट गॉन। Read from the text, original text, but what we do right these days, we read from WhatsApp, small messages, Twitter, and then we interpret, और लाइफ में कॉम्प्लेक्सिटीज आती है। Reading is something that helps you to grow your personality. अब बेकन ने कहा है, reading makes a man perfect, a complete man. If you read a lot, you can read about so many things, so varieties of topics, subjects are there. You can read medical science, you can read any branch of knowledge and learning if you are a reader. I don't like to make you bookworm. किताबी कीड़ा नहीं बनाना चाहता। Under the umbrella, it is not possible that you read all the books which are available in this world, but at least read books that appeals to you, that helps you to grow your personality. अरे भाई आप देखिए ना, भारत के महान जितने भी दादा भाई नेहरू थे, आप महात्मा गांधी देख लीजिए, और बड़े बड़े लोग देखिए, सब जेल में पढ़े हैं, और पढ़े और लिखा भी है। तो पढ़ने की कोई जगह नहीं होती है, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है।
और पढ़ने में कोई मेरे ख्याल से स्ट्रेस नहीं होता है। पढ़ने से माइंड रिफाइंड होता है, प्यूरिटी विल बी देयर, नोबिलिटी इन योर माइंड। गुड बुक्स आर ऑलवेज गुड फ्रेंड्स। ये मैं नहीं कहता हूं, कोट्स कहते हैं, कोटेशंस कहते हैं। बुक्स आर ऑलवेज गुड फ्रेंड। कीप हैबिट ऑफ रीडिंग गुड बुक्स, कीप अ गुड बुक ऑलवेज विथ यू। अब पढ़िए ना, रांडाबन को पढ़िए, उसकी किताब पढ़िए, विचारों वाली किताब है। मैं रांडाबन ने कौन सी किताब लिखी है नेमा जी? आपने देखा द सीक्रेट, रहस्य। ये विचारों की दुनिया है, होल वर्ल्ड इज ऑफ थॉट, कंसेप्ट। पढ़िए, अच्छी बुक पढ़िए भाई, नोवेल पढ़िए, कुछ पढ़िए। 3 महीने में कम से कम आप 3-4 किताब पढ़ लेते या पढ़ेंगे अभी, वो दैट विल चेंज योर होल कोर्स ऑफ लाइफ। आई कैन बेट अपॉन दैट। अ गुड बुक will change your attitude, approach towards life. So reading is something very constructive. You need to have good command over language. Any read प्रेमचंद की पढ़िए, स्टोरी पढ़िए, चलिए हिंदी में पढ़िए, उर्दू में पढ़िए, जनाब किसी में पढ़िए, पढ़ना छोड़िए मत, जो हम छोड़ चुके हैं। मैं यहाँ पर इंदौर में यहाँ नाम लेना चाहता हूँ, एक नामचीन प्रोफेसर, मैं नाम XYZ रखना चाहूंगा। एक कॉन्फ्रेंस में वो बोले, और मेरे को अभी तक याद है, मैं छोटा था उस समय। छोटा का मतलब ये, मैं आप स्टूडेंट के रूप में आया था कॉन्फ्रेंस भाग लेने, कि मैं रोज कम से कम 5 पेज पढ़ता हूँ। फिर धीरे धीरे मैंने उसको 50 पेज में तब्दील किया, तो ही बिकेम ए गुड प्रोफेसर अल्टीमेटली। आप 5 पेज से चालू करिए, नींद आएगी, अच्छा नहीं लगेगा, स्ट्रेस होगा पढ़ने से, पर कीप डूइंग लाइक दिस, and a day will come then you will be able to read 200, 250, 300 pages in a day. Don't spend too much time on this gadget, mobile. Next, why reading is important? It develops your mind, nourishes your mind. You come to know about new things. It helps you to develop your imagination. Writers are always good readers. Then improve your reading skills. There is 5 PSQ 5R in reading that I have not presented here. Purpose, survey, question, review, recite, reflect, and read selectively. That I have skipped here only. Reading is very essential, and you don't read, then how do you come to know about a job? Even you could not have come to attend this class also, you could not have read the message on your WhatsApp group. Reading is very important in every sphere of life, whether you are a layman, whether you are an educated person. So for creating any job opportunity, reading is must. So these are the types of reading. I'm just going through them very fast: extensive, intensive, scanning, skimming, exploratory, study. And you do all these things knowingly or unknowingly. Extensive, that means like for example, you read any book. Intensive, whenever you want to read any textbook of your. Scanning, whenever you read any newspaper. Skimming, whenever you like to jump from one news to another news. Exploratory, when you explore something. Study, when you do any study. So these are the very simple manner in which you can understand types of reading. Then comes the last but very important skill, writing. Writing is writing anything with the help of words, and through which you express your ideas or your feelings or your expressions. So these are the very important steps to be a good writer or to have effective writing. You can do brainstorming, think, then write. आचार्य शर्मा जी कहते हैं, भगवान ने हमको क्या दिए हैं? 2 कान और 1 जीवान दिए, जिससे हम सुने ज्यादा और बोले कम, और लिखे इन्हीं चीजों से। हम जब सुनेंगे ज्यादा, बोलेंगे कम, पढ़ेंगे ज्यादा, तो ब्रेनस्टॉर्म कर पाएंगे। माइंड मैपिंग, do mind mapping. Things should not be in haphazard manner or in disturbed manner. There should be there should be continuous flow of information. अभी मैं आपसे कम्युनिकेशन करते करते कोई दूसरी बात करूं, आप बोलोगे टीचर शायद इनकी उम्र हो गई है। हम बोलते हैं ऐसा स्पीकर के बारे में, बोलने लग जाते हैं, इनको टाइम का ध्यान नहीं। भाई ये सब माइंड मैपिंग की चीज है। कीप योर माइंड ऑलवेज अलर्ट, ऑर्गेनाइज योर थॉट्स, स्ट्रक्चर योर पैराग्राफ्स एंड सेंटेंसेस, then compose a draft first of all. Do not go for any final piece of writing. Check your grammatical. Now so many softwares are available, use them.
Even when I attended a workshop few days ago, in Word also, you can speak and write. Only you should have, you would only speak. It will keep all the spell check and everything, grammar and everything. And then whenever your checking is over, ready with your final draft. My dear students, I like to take a promise from all of you that when you will reach to the final day of your this particular workshop or program, please organizers, making sure, ask them, give them an assignment that they should write at least a piece of paragraph, or they should post you an audio clip of their presentation, or a presentation they should make. So this workshop will be very, very beneficial for them. I hope that you are listening to me. Iqbal sir, please sir. Done, sir. Okay. Then comes the next non-verbal type of communication. And in non-verbal body language, it's only not body language. It's a kinetic movement, physical movements. That is body language. Body language here, eye contact, facial expressions, postures, gestures. Then para language. It goes along with the verbal language. Non-verbal, like speech. मैं बोलता हूं आपसे जैसे मेरा नाम नवीन है, मेरा नाम नवीन है, मेरा नाम नवीन है। आप बाहर जाइए यहां से, आप बाहर चले जाइए ना। अब देखिए इसमें क्या अंतर है। ये वर्बल है पर इट हैज गॉट नॉन वर्बल क्यूज। बोलने का जो टोन है। अब बैठिए ना आप, प्लीज बैठिए ना आप। कितना अंतर आ गया। आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है। यू लाइक दिस, यू डू लाइक दिस इन योर लाइफ। हम घर में ऐसी बातें करते हैं, परिवार में करते हैं, स्कूल में करते हैं। तो दीज आर पार्ट ऑफ पैरा लैंग्वेज। प्रोक्सिमिक्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज। लैंग्वेज ऑफ डिस्टेंस, social distancing, what type of distance we should maintain with our receiver. Chronemics, it's a language of time. In what time, at what time, how much time we should take to communicate. Self presentation, that means your attire. So let me go very briefly. These are the facial expressions. You know better than me, because you are using emojis. I don't. We do like this, we do like this, we send flowers also. So these are the facial expressions. You can gauge very easily, you can see very easily. Oh, ignoring somebody, looking very bad. Read a very good book is there. Ellen Pease Body Language. It's available everywhere. Indian versions are also available. Ellen Pease Body Language. Wonderful book. How to shake hands. Not cold, cold folded hand. Therefore, nowadays shaking is not allowed due to COVID. How to, like this namaskar you do. This shows you are not charged. Respect. That shows proper respect. Folded hands properly, like this. Different meanings may be there. Because signing this in India, it may be okay. But in Japan, you do, people take it, mark of abuse. Don't do. Without understanding the culture. Language or communication always goes along with culture also. In India, it is a good sign, but it may be a bad sign in other countries. Remember, knowing the culture of your receiver is very important. Therefore, understanding is like that, not simple understanding. Know the culture. आप सब करते हैं। पापा का यार घर में मम्मी का जब हमारा मूड खराब होता, कम्युनिकेशन नहीं करते हम। हमें 500 रुपए चाहिए और आज ही चाहिए, अभी चाहिए, तो हम चाचा के पास जाएंगे, चाचा को फोन लगाएंगे कि चाचा हो पापा से बोलना मुझे चाहिए। बिकॉज यू नो दैट यू कैन कम्युनिकेट टू योर चाचा इन अ वेरी फ्रेंडली मैनर रादर देन योर पापा। तो कल्चर, उसका बैकग्राउंड, उसका स्टडी करना बहुत जरूरी है। जैसे मैं जानता हूँ कि विशिष्ट के बच्चे हैं, दे आर ऑफ टॉप क्वालिटी, टॉप नॉच इंस्टीट्यूट है, एंड इट इज नोन फॉर क्वालिटी ओनली, सो आई शुड टॉक इन दैट मैनर ओनली, अदरवाइज आई कुड हैव फिनिश्ड माय लेक्चर। नेक्स्ट, these are the posture, gestures and eye contact that you can keep an eye. इंटरव्यूज में जाएंगे ना, जब आप ऐसे बैठे हैं, आप दोनों टांग क्रॉस करके बैठे हैं, आप ऐसे बैठे हैं, दैट मींस यू आर शिवरिंग, यू आर लूजिंग योर कॉन्फिडेंस। या बार बार आप ये कर रहे हैं, रबिंग योर आईज, आप ये कर रहे हैं या ये कर रहे हैं, पेंसिल करते हैं, टाई, यू स्टार्ट प्लेइंग विथ योर टाई रादर। सो डोंट डू ऑल दिस। देखिए ना आप पोस्चर,
हेडेक होता है, हम ऐसा करते हैं। कई बार घर पे मम्मी बोलती है ऐसा मत बैठो, व्हाई? हैव यू लॉस्ट समथिंग? हैव यू लॉस्ट योर बिजनेस? बिजनेस चला गया आपका क्या, पूरा घाटे में आ गए? So never make such awkward postures in your life. Proper postures are required. Gestures are required. See all these postures so that others, your receiver, they may take you very, in a very healthy manner, in a reciprocal manner, so that he could receive you with great warmth, with great care, and with great sincerity. Next, proxemics that I already talked, social distancing, how much distance you should keep. आप देखिए ना, बॉडीगार्ड चलते हैं, वो डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। आप पार्क में देखिए, कई दो लोग दोस्त बैठे हैं, साथ साथ बैठे हैं, वो एक टैग है ना दोस्ती पे, क्या मैं भूल रहा हूँ, दोस्त पे क्या बोलते हैं, मैं एकदम आई एम नॉट गेटिंग, नीमा जी को याद होगा, दोस्त वही है जो आपके हम कदम या हर कदम आपके साथ चले। तो हर कदम साथ चले, पर आज की कंडीशन में नहीं चले, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें। प्रोक्सीमिक्स तो ऑलरेडी कह चुका है कि पर्सनल लेवल पे आपका जो जोन होगा वो कम होगा। कंफर्ट जोन, यदि आप देखें ना क्लासरूम में भी टीचर बहुत ज्यादा आगे आके बोलता है तो हमको एकदम ऑकवर्ड हो लगता है, वी फील रेस्टलेसनेस, अनइजीनेस। सो देयरफॉर वो पोडियम होता है, देखा होगा, वो इज द टीचर, देयर इज नो मार्क ऑफ डिमार्केशन लाइन इज नॉट देयर। हम खाना खाने बुलाते हैं डाइनिंग टेबल पे, तो हमारी थाली और उसकी थाली में, हमारे जो मेहमान आता है उसकी थाली में अंतर होता है, उसकी थाली हमारी थाली में सटा के नहीं रखते हैं, वो डिस्टेंस है भाई, सब वो कम्युनिकेशन है। नहीं तो समझेगा कि मैं इसकी थाली में से ही खाऊं ज्यादा अच्छा है फिर तो। तो कीप प्रॉपर डिस्टेंस इन योर कम्युनिकेशन व्हेनेवर यू कम्युनिकेट विथ योर रिसीवर। तो दीज पब्लिक में देखा आपने, नेताजी ऊपर रहते हैं या अच्छा स्पीकर ऊपर बोलता है और उससे 12 फीट की दूरी बना के लोग रखते हैं, तो देख सके उसके हाव भाव को, हम सब बॉडी लैंग्वेज को देख सके। सो प्रोक्सीमिक्स इज लैंग्वेज ऑफ distance, and you have to keep distance in mind, how much distance I should keep with my receiver. Next, chronomics, it's a language of time, though I have not kept time in my lecture, this factor of time in my lecture, but how much time you should take, otherwise taking too much time, taking less time। अभी मान लीजिए मैं लेक्चर अपना 20 मिनट का होता और 5 मिनट खत्म कर देता, तो आप समझते कि इसके पास कंटेंट नहीं है इनके पास, और यदि बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ तो इट मीन्स आई एम शोइंग माई नॉलेज। इट मे बी अदर वे अराउंड। It is not like that, because I am taking too much interest and you are taking also interest, therefore I am here. So chronomics, it's the language of time, how much time a message takes to reach to the receiver. So keep this factor in your mind, time is a very vital factor। आपको अभी जैसे इकबाल साहब ने मुझे कहा कि नेताजी आप यदि कल लेक्चर है 10:30 पे आना, और मैं अभी 10:45 तक आपको यहाँ पर अपनी सूरत नहीं दिखा, तो आप समझते आज गए, आज भूल गए, परेशान होते। तो ऑलवेज कीप दिस फैक्टर ऑफ टाइम, इट शोज योर अप्रोच, पॉजिटिव अप्रोच इन लाइफ। डिसिप्लिन, हाउ मच डिसिप्लिन यू आर। कभी कहता ना इसलिए अंग्रेज बड़ा टाइम, भाई वो सही है। आपको मैंने कहा कि आप सराफा में मुझे शाम को 6 बजे मिलना, और आप 6:30 बजे तक नहीं आए, तो व्हाट विल आई थिंक, कि आप भूल गए, आप आना नहीं चाहते थे, आपने मेरी बात नहीं सुनी, आपको समझ में नहीं आया, आपका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। सो मेनी थिंग्स विल कम टू माई माइंड माई डियर। हम टीचर यही समझते हैं, जिस दिन बच्चे कम आते हैं, टाइम पे नहीं आते हैं, हमने प्रोग्राम दिया, कि हमने सर यही बोलते हैं कि आपने सूचना नहीं दी थी क्या? भाई हमने तो दी थी, पर आप यू हैव नॉट टेकन टाइम इनटू कंसिडरेशन। टेक टाइम ऑलवेज इन योर लाइफ। टाइम इज मनी, टाइम इज हनी। रिमेंबर माय वर्ड्स, टाइम इज मनी, टाइम इज हनी। ओके, बिग थैंक यू टू वन एंड ऑल। आई मिस यू, I will be in touch with you, and whenever you call me, I am always readily available to the members of my extended family. Big thank you to one and all. Hello. जी सर, थैंक यू सो मच सर। इकबाल सर आप अनम्यूट कर सकते। Okay. Thank you so much, sir. It's a wonderful session. It was so energetic, even give a new momentum in life. Is a given acceleration, acceleration in this morning. Thank you so much. Over to Yashri. Yeah. Thank you so much, Iqbal sir. And yes, of course, thank you so much, Naveen sir. It is always a pleasure listening to you, sir, and ever inspiring. I think we can go on like this whole day.
but yes, time constraints. In this short span of time, you very beautifully covered each and every aspect of communication. And so, yes, I must admit, very well said. One needs to be a good listener and reader if he or she wants to be a good speaker. And definitely, thank you so much, sir, for your all your suggestions, and we'll take care of it. And thank you so much for all your valuable tips. I truly agree that this learning comes from the experience, and learning to stay, this must come from the self learning. So thank you so much, sir, once again. Now to propose a One formal. minute. Yeah, Yeah. yeah, 1 minute. Before that, I forget. Really sorry for that. I am really Okay. thankful to the organizing committee, especially Professor Iqbal ji, for giving me this opportunity to interact with the participants, with your lovely students. Thank you very much to Nema ji, and even your head of the family, head of the Parivar or Mukhiya Narang sir, Dr. Naveen Narang ji. To you also, Dubai madam, to Pandya madam, to Ranjana Patel madam, to Mandip sir, our very lovely and very bubbly Mandip sir, and even to my very new discovered sir Kunal ji, for giving me an opportunity to interact. And I'm really thrilled, excited. I don't know. Sometimes even I lost momentum also. I may be wavered at times, but uh, excuse me if I have said anything wrong. I hope that I hope that you take certain points out of it, and it will be beneficial for our learners. Thank you one and all. Thank you very much for making my day very, vibrant. And I started day with you young people. I hope that this energy will sustain in me for a period of for a long time, for a for whole period of this remaining part of COVID-19. Thank you very much. Thank you so much, sir. Now I request Professor Ranjana Rajak to propose vote of thanks. Thank you, sir. Good morning to one and all present here. On behalf of entire fraternity of management, I, Professor Ranjana Rajak, extend my heartfelt thanks to our today's chief guest, Dr. Naveen K. Mehta, sir, Associate Professor, Sanchi University. His insight lecture was on communication skill, was full of wisdom and information. Thank you so much, sir, for giving your precious time and sharing your valuable knowledge with us. As you said, communication is a two-way process where sender and receiver actively participate for the better understanding. And I sincerely hope all the participants that they have listened you actively and will surely move in right direction. As practice makes a man perfect, similarly, proper communication makes understanding perfect. So thank you so much, sir, for giving your precious time. I would also like to thank Dr. S.M. Anas Iqbal, Director, Wishes School of Management, and Dr. Naveen Narang, Managing Director, Wishes School of Management, for organizing such a wonderful and knowledgeable lecture for us. I would also like to thank all the staff members of Wishes School of Management for their contribution in organizing this fruitful event. Last, I would also like to thank all the participants for showing their keen interest and joining the session. All the very best to all the students for learning in a better way. Thank you once again. Thank you, sir. Thank you so much, Ranjana ma'am. Thank you so much, Naveen sir, Dr. Iqbal, and all the faculty members. Now, I think we should move further with our program, and we should start with the first day of our session. And for this, we have a wonderful mentor and your very own Professor Aditi Khandelwal. She'll be guiding you throughout this program, and I hope you'll get to learn a lot from her. So now I may request Professor Aditi Khandelwal to please proceed with the program. Aditi ma'am, please. Thank you so much, Yashri ma'am. Good morning, Naveen sir. Good morning, Iqbal sir. Good morning, each faculty and all the participants. I guess Best, Naveen sir has. best wishes, madam, for your this particular program. Thank you so much, sir. Thank you. I'm Professor Aditi Khandelwal. Many of you already know me. I'm the resource person for this 7-day certification course on communication skill. So very warm good morning to one and all.
I guess Navin sir has already explained about the communication, basic of communication and why communication. So adding to his words, I would like to take this program further. Today we will be discussing seven C's of effective communication. Robin sir, can you please share Yeah, this? yeah, just फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी पढ़ा है बीकॉम। नहीं सर, लफड़े हो गए ना, ये बच्चे भी बहुत दिमाग खराब कर रहे हैं। सर को बोल दिया और सर भेज रहे छोटी ma'am, screen visible? We'll be starting with the 7 C's. Just Okay, so I guess Navin sir has already explained to you people that what is communication, communication का मतलब क्या होता है, what is effective communication. So उसमें add करके I'll be sharing 7 C's of effective communication today. कि अगर आपको अपनी communication effective बनानी है, अगर आप अपना message receiver तक पहुंचाना चाहते हैं effectively, so what all 7 C's that you have to include in your message, which make your message, which make your communication more effectively. So we'll be starting with that today. Next slide, Robin sir. So this is the 7 communication, which include conciseness, clarity, completeness, consideration, courtesy, correctness. So these all are the 7 C's. When you have to communicate very effectively, or when you have to convey your message to the receiver without any manipulation, without any manipulation, or without any addition or deletion, that all the 7 C's to be included in your message. So we'll be starting one by one with this 7 C's. The first one is completeness. Robinson, next slide. So first is completeness. When you have to convey your message to the receiver, then your message should be very complete. Like कोई भी आप message आपके receiver तक पहुंचाना चाहते हैं, आपका message पूरा complete होना चाहिए. It should contain every information. Like if I say that tomorrow we will be going, so you all have to come to the college by 10 a.m. So many of you will start thinking, कहाँ जाएंगे, क्यों जाएंगे, हम कहाँ जा रहे हैं? Many questions will arise. ठीक है? So this message is not complete. When I say कि आपको एक complete information या complete message pass on करना है receiver तक, so this message is not complete. Many of you will discuss कि हम कहाँ जाने वाले हैं, हम क्यों जाने वाले हैं, हम किस purpose से जाने वाले हैं, ठीक है? So incomplete message will always create misunderstanding, will always create problem. So आपका मैसेज जब भी आप रिसीवर तक पहुंचाना चाहते हैं, it should contain each and every information that is important and required. If I'll say कि हम कल पिकनिक पे जाने वाले हैं, so you all should report to the college campus by 10 a.m. ठीक है? So this message is very complete कि हम कल पिकनिक पे जाने वाले हैं, so आपको 10 बजे तक कॉलेज कैंपस में रिपोर्ट करना है. If I'll not mention कि हम कहाँ जाने वाले हैं, तो many problem will arise. You will start thinking कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं. Many of you will back out. ठीक है? So आपका information या आपका जो message है वो complete होना चाहिए. It should contain every information जो particular आप सामने वाले तक पहुंचाना चाहते हैं. ठीक है? The next one will be Robinson, next slide. The next one will be concreteness. Okay, concreteness here means keep it simple. जितना simple, जितना specific आप अपने message को रखेंगे, वो उतनी better तरीके से सामने वाले को समझ में आएगा. ठीक है? आप अगर कोई भी information सामने वाले तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उसे आप जितना simple way में बोलेंगे, जितना specific way में बोलेंगे, उतना better उसे समझ में आएगा. Like if I'll say to you people कि ये file है और आप ये manager को दे आओ. When you are working in an organization, obviously बहुत सारे managers
होते हैं वहाँ पे, लाइक प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, अकाउंट्स मैनेजर. इफ आई विल से कि ये फाइल आपको मैनेजर को दे के आनी है, सो यू विल बी ना आप एक क्वेश्चन अराइज होगा, मैनेजर, विच मैनेजर आई एम टॉकिंग अबाउट. मैंने कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आप तक पास ऑन नहीं करी है, ठीक है. इफ आई विल से कि ये फाइल आपको अकाउंट्स मैनेजर को दे के आनी है, सो इट विल प्रोवाइड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन. ये मेरा मैसेज एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है कि ये फाइल पर्टिकुलरली अकाउंट मैनेजर को दे के आनी है, ठीक है. सो द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कंक्रीटनेस. आपका जो भी मैसेज है उसे स्पेसिफिक यूज करो, ठीक है. जो भी आप इन्फॉर्मेशन सामने वाले तक पास ऑन करना चाह रहे हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन नहीं, जो जितना रेलेवेंट है उतनी इन्फॉर्मेशन आप अपने मैसेज में देंगे तो सामने वाला उतने अच्छे से समझ पाएगा. नेक्स्ट स्लाइड रॉबिन सर. Next one. Okay, now the third one is consideration. When we are talking about the consideration, हमेशा हमें सामने वाले के point of view को या सामने वाले की situation को consider करके चलना है. Like नवीन sir already explained, I attitude की बजाय हम अगर you attitude पे shift हो जाएंगे तो हमारा communication बहुत बेहतर हो जाएगा, ठीक है. आप हमेशा सामने वाले की situation को भी देखिए और उसके हिसाब से चलिए. Like अगर मैं किसी चीज के लिए किसी सामने वाले को बोल रही हूँ तो आई हैव टू पुट माई सेल्फ इन हिज शूज कि वो क्या चाहता है, उसके क्या ओपिनियंस है, उसके क्या बिलीव्स है, उसकी क्या वैल्यूज है. सो फर्स्ट टू बी सिंसियर. आप जब भी किसी से किसी चीज का कंसिडरेशन ले रहे हैं या आप किसी को कोई मैसेज पास ऑन कर रहे हैं, बी सिंसियर, अनबायस्ड रहिए. मेनी अ टाइम्स इट हैपेंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन कि कोई कलीग है जिसे आप थोड़ा कम पसंद करते हैं और कोई कलीग है जिसे आप ज्यादा पसंद करते हैं. मेनी अ टाइम्स इट हैपेंस. तो हम क्या करते हैं, हम उसके ओपिनियंस और व्यूज को ज्यादा कंसिडर करते हैं और ज्यादा सुनने की कोशिश करते हैं, इन स्पाइट ऑफ दैट कि हम सेकंड वाले को भी सुने और उसके भी व्यूज को उतना कंसिडर करें. तो ये अनबायस्डनेस आती है, ठीक है. सो विदाउट एनी बायसनेस हमें सामने वाले अगर मैं 3 लोगों से बात कर रही हूँ तो 3 लोगों के जो भी ओपिनियंस है या जो भी बिलीव्स है, जो भी वैल्यूज है, मुझे तीनों की उन चीजों को कंसिडर करते हुए एक डिसीजन बनाना है, ठीक है. सो जब भी मैं एक मैसेज की बात करूंगी कि हमें मैसेज पहुंचाना है, अनबायस्ड रहिए. सामने वाले की जो भी ओपिनियन है, जो भी बिलीव्स है, जो भी व्यूज है, उसे कंसिडर करिए. बहुत से लोग होते हैं हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी बात करते हैं अपनी अपनी चलाना. हम बोलते हैं वो तो अपनी अपनी चलाता है, किसी और की नहीं सुनता या किसी और की नहीं सुनती. तो क्यों उनसे हम ज्यादा बात करना है, ज्यादा कम्युनिकेट करना पसंद करते हैं? नहीं करते हैं. क्यों? बिकॉज वो हमारी तो सुनते ही नहीं है. हमारे व्यूज क्या है, हमारी ओपिनियन क्या है, वो कंसिडर नहीं करते हैं. सो अगर आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना चाहते हैं किसी से तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सामने वाले की बात भी सुने, सामने वाले की ओपिनियन, सामने वाले की फीलिंग, सामने वाले के वैल्यूज को भी कंसिडर करते हुए चलें. तभी जाके आपका मैसेज बहुत इफेक्टिव बन पाएगा. नेक्स्ट स्लाइड रॉबिन सर. Like this picture shows. Okay, ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज क्लैरिटी. हम क्लैरिटी की बात करेंगे. क्लैरिटी मतलब ट्रांसपेरेंसी, ठीक है. मैं नॉर्मल से एग्जांपल लूंगी. जब भी हमारी किसी से कोई लड़ाई हो जाती है या फिर किसी से कोई मनमुटाव हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि यार जो बोलना है सामने बोलो, पीछे मत बोलो. बी ट्रांसपेरेंट. जो आपको बोलना है आप क्लियर वे में बोलो, उसे घुमा फिरा के बोलने की बजाय. सो क्लैरिटी हियर मीन्स कि आपको आपका जो भी मैसेज देना है, बी क्लियर अबाउट योर मैसेज. यूज स्पेसिफिक वर्ड्स. अगर आप कोई भी एक सेंटेंस बोलना चाहते हैं या कोई भी एक इंफॉर्मेशन पास ऑन करना चाहते हैं तो एटलीस्ट 70 to 20 वर्ड्स का जो एक सेंटेंस है वो क्लियर मैसेज पास ऑन करेगा, ठीक है. क्लियर मैसेज सामने वाले तक पहुंचाएगा. कई बार ऐसा होता है कि हम बात करते करते इतनी बात करने लग जाते हैं कि हम एक्चुअल में जो बोलना चाहते थे या मैसेज सामने वाले तक पहुंचाना चाहते थे वो क्लियर नहीं हो पाता. वो बातों की इतनी सारी बातों में वो स्पेसिफिक मैसेज कहीं गुम हो जाता है. सो नेवर डू दैट. आप जब भी किसी को कोई बात बोलना चाहते हैं या अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं सो एग्जैक्ट वर्ड यूज करिए, कंक्रीट वर्ड यूज करिए. ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जैसे आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज करेंगे उसके बजाय एक स्पेसिफिक वर्ड को ढूंढिए कि अगर मैं ये बात इतने ग्रुप ऑफ वर्ड्स में यूज कर रहा हूँ तो इसके बजाय क्या मैं एक सिंपल से वर्ड में इस बात को सम अप कर सकता हूँ. सो ऑलवेज क्लियर अबाउट योर मैसेज. हमेशा सामने वाले को इतनी क्लैरिटी रखिए आपके मैसेज में कि आप जिस तरीके से सामने वाले को मैसेज पहुंचाना चाहते हैं वो उसी तरीके से उस तक पहुंचे. नेक्स्ट स्लाइड. कर्टसी. कर्टसी सबसे इम्पोर्टेंट
अगर हम 7 C's में बात करें तो कर्टसी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। नो मैटर व्हाट आप इतना इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं नहीं, लेकिन आप कर्टसी हमेशा शो करिए, ठीक है? लाइक अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो ऑलवेज ग्रीट दैट पर्सन। आपने किसी से अपना कम्युनिकेशन स्टार्ट किया है या कोई बात स्टार्ट करा है, सो ऑलवेज ग्रीट, उस इंसान को ग्रीट करिए, ठीक है? से गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, थैंक यू, सॉरी। अगर कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है तो सॉरी फॉर द इंटरप्शन। आप जितना पोलाइट मैनर में, जितना कर्टसी से आप सामने वाले तक अपनी बात पहुंचाएंगे या सामने वाले के आप किसी रिसीवर के सामने कम्युनिकेट करेंगे, उतना बेटर आपका कम्युनिकेशन स्किल दिखेगा, उतना बेटर आपका मैसेज सामने वाले तक पहुंचेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी किसी से बात कर रहे हैं तो यू शुड शो सम कर्टसी टू देम, ठीक है? लाइक आपसे बड़े हैं तो यू शुड ग्रीट दैट पर्सन, छोटे भी हैं तो ठीक है। इफ यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, सो कर्टसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखी जाती है। द वे यू बिहेव इन फ्रंट ऑफ देम, वो आपकी पूरी पर्सनालिटी के बारे में बात करेगा, ठीक है? सो ऑलवेज बी पोलाइट एंड ऑलवेज शो सम मैनर्स और एटिकेट्स टू इन फ्रंट ऑफ समवन, सो दैट वो आपकी तरफ या आपकी बात में इंटरेस्ट ले, आप जो भी उससे कम्युनिकेट करना चाहते हैं या जो भी मैसेज आप उससे देना चाहते हैं वो उसमें अपना इंटरेस्ट शो करे, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड रॉबिन सर। और एटलीस्ट स्माइल, ओके फाइन, ठीक है। अगर हम नहीं बोल पा रहे हैं, मान लीजिए हेजिटेशन है, हम नर्वस है, या कहीं भी हम नए ऑर्गेनाइजेशन में गए हैं तो मेनी टाइम्स इट हैपन कि हम बहुत जल्दी किसी से खुल नहीं पाते या बात नहीं कर पाते, ठीक है? बहुत सौ की आदत होती है कि उन्हें इतना बात करने की आदत नहीं होती है। तो अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं, इफ यू कैन नॉट ग्रीट दैट पर्सन, और अगर आप इतना नहीं बोलते हैं, तो एटलीस्ट स्माइल, ठीक है? हम बोलते स्माइल अगर आप दे देंगे तो एटलीस्ट सामने वाले को कि आप इतने ज्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं है ये समझ में आएगा, ठीक है? तो आप अगर सामने वाले को ढंग से ग्रीट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट, या सामने वाले का मैसेज बहुत ज्यादा ढंग से तरीके से नहीं समझ पा रहे, तो एटलीस्ट पास ऑन अ स्माइल टू समवन। इट विल शो योर इन्वॉल्वमेंट कि आप इन्वॉल्व हो रहे हैं उनके कम्युनिकेशन में, या फिर आप थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड रॉबिन सर। कंसाइजनेस, हम कंसाइजनेस की बात करेंगे, ओके? सो कंसाइजनेस हियर मीन्स जितने लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स के साथ अपना मैसेज आप पास ऑन करेंगे सामने वाले पे, वो उतना बेटर होगा। लाइक अगेन आई विल से, कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे वर्ड्स को रिपीट कर देते हैं, अगेन एंड अगेन हम उस वर्ड्स को रिपीट करते जाते हैं, या फिर हमें जो मेन मैसेज पहुंचाना है उस मैसेज पे बात करने की बजाय हम इतना सब कुछ बोल जाते हैं कि सामने वाले को समझ ही नहीं आता कि हम बोलने क्या आए थे, या हम मैसेज क्या देने आए थे, या फिर हमारा मैसेज किस 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 तरफ था, ठीक है? सो हमेशा जितने कम वर्ड्स यूज करेंगे आप अपना मैसेज देने के लिए, उतना बेटर है, ठीक है? हमेशा प्रिसाइज एंड कंसाइज रखिए अपने मैसेज को, जितने लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को यूज करने की बजाय कुछ वर्ड्स में अपनी बात को सम अप करने की कोशिश करिए, ठीक है? सो दिस इज कंसाइजनेस। नेक्स्ट स्लाइड रॉबिन सर। Like if you put extra and irrelevant words, people might get bored. Same, आप जितना irrelevant words use करेंगे, जितना extra word use करने की कोशिश करेंगे, उतना आपका मैसेज गुम हो जाएगा जो आप सामने वाले तक पहुंचाना चाहते हैं, और उतना सामने वाला जल्दी बोर भी होने लग जाएगा, ठीक है? सो इट्स बेटर कि आप टू द पॉइंट जो है वो बात करिए, और टू द पॉइंट अपना मैसेज सामने वाले तक कन्वे करिए या डिलीवर करिए, ठीक है? Correctness, this is again one of the most important 7 C's. Correctness, आप जो भी आपका जो भी मैसेज है, इट शुड कंटेन प्रॉपर ग्रामर, प्रॉपर एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स जितने भी है, और आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स, ठीक है? आप जब भी कोई मैसेज भेज रहे हैं सामने वाले को या मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ग्रामेटिकली उसमें बिल्कुल करेक्ट हो, ठीक है? कई बार ऐसा होता है कि सही नहीं हो पाते हैं हम लोग, ठीक है? हर तरीके से प्रॉपर ढंग से हमें नहीं आता, हो सकता है कि किसी की ग्रामर इतनी अच्छी नहीं हो, या हम उतने फैक्ट्स एंड फिगर्स से हमें नहीं पता है, बट ट्राई टू डू दैट कि आप अपने मैसेज में जितना भी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, एटलीस्ट जितनी भी इंफॉर्मेशन आप सामने वाले तक कन्वे कर रहे हैं वो प्रॉपर हो। आप शॉर्ट सेंटेंस लिखिए या शॉर्ट मैसेज लिखिए, बट ट्राई कि आप उसमें स्पेलिंग एरर्स या ग्रामेटिकल एरर या फैक्ट्स एंड फिगर की मिस्टेक ना करें। व्हाटएवर फैक्ट्स एंड फिगर्स यू आर इंक्लूडिंग इन योर मैसेज, एटलीस्ट गो थ्रू एंड क्रॉस चेक, ठीक है? कि हम ये फैक्ट्स एंड फिगर इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, ये सही है या नहीं है, ठीक है? कम
कम हो सके तो कम डालिए, पर प्रॉपर डालिए, सही डालिए, कभी भी गलत इन्फॉर्मेशन मत डालिए, एल्स इट विल लीड टू प्रॉब्लम, इट विल लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सो आपका मैसेज सबसे जरूरी है कि करेक्ट होना चाहिए, बिकॉज इट विल मेक अ गुड इम्प्रेशन। अगर आपका मैसेज सही है और व्हेन इट कंटेन्स गुड ग्रामेटिकल और फैक्ट्स एंड फिगर और एक्यूरेसी आपकी सही है उस मैसेज में, तो कहीं ना कहीं वो आपका इम्प्रेशन सामने वाले पे अच्छा पड़ता है। सो हमेशा आपका जो मैसेज है भलाई से शॉर्ट रखिए, सिंपल रखिए, पर करेक्ट रखिए विदाउट एनी मिस्टेक। नेक्स्ट स्लाइड। कॉमा सेव लाइव्स, लाइक लास्ट वाली स्लाइड से हम कॉमा लगाना, अब कॉमा ये एक नॉर्मल ग्रामेटिकल मिस्टेक है, मेनी टाइम्स विल डू, हम एक साथ बोल जाते हैं या फिर हम पंचुएशंस का ध्यान नहीं रखते हैं कि कहाँ पे कॉमा लगना चाहिए, कहाँ पे फुल स्टॉप लगना चाहिए, या फिर कहाँ पे एपोस्ट्रोफी रखना चाहिए। सो मेनी टाइम्स इट हैपेंस कि हम मिस्टेक कर देते हैं ग्रामेटिकली। सो बहुत से, ठीक है, इग्नोरेंस होता है कि बहुत से लोग इस तरफ ध्यान नहीं देते, पर बहुत से ऐसे होते हैं जिन्हें छोटी से छोटी मिस्टेक भी टॉलरेट नहीं होती। वो सबसे पहले देखेंगे कि आपने कैसे लिखा है, या आपने प्रॉपर पंचुएशंस यूज करे हैं या नहीं करे हैं, या आपने प्रॉपर सेंटेंस फॉर्मेशन किया है या नहीं करा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप अपना मैसेज मेनली जब आप राइटिंग के थ्रू किसी सामने वाले तक कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यू शुड ऑलवेज यूज प्रॉपर स्पेलिंग्स, proper grammar, and proper sentence formation. These three things are very important to make your message highlight or to make your message correct. Next. So 7 C's, like I said कि 7 C's are very important for your effective communication. So अगर आपके मैसेज में ये 7 C's हैं which we have discussed right now, so it will save your time and cost. ये आपका टाइम और आपकी कॉस्ट दोनों सेव करेगा. It will help in conveying your message properly to the receiver. रिसीवर आप जिस तरीके से अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं उसी तरीके से रिसीवर के पास वो आपका मैसेज पहुंचेगा without any mistake or without any manipulation. And it will also help in building your good relationship with the people. The more and the better and effectively you will communicate to the receiver, the better will be your relationship with them. ठीक है, हम हमारा मैसेज जितनी प्रॉपर ढंग से, जितना इफेक्टिवली सामने वाले तक पहुंचाएंगे, उतनी बेटर रिलेशनशिप हमारी उसके साथ बिल्ड होगी. एंड इट विल एलिमिनेट इन सर्टेन अनसर्टेनिटी. लाइक लास्ट टाइम जो भी प्रॉब्लम्स या लास्ट मोमेंट जितनी भी प्रॉब्लम्स अराइज होती है, ये उसे भी एलिमिनेट करने में हेल्प करेगा. मेनी टाइम्स हैपन कि हम पहले से चेक नहीं करते हैं हमारा मैसेज. अब लाइक हमने एक पिकनिक की बात करी थी कि जैसे इफ आई से कि टुमारो वी विल बी गोइंग फॉर अ पिकनिक, यहाँ पे मैंने पिकनिक अब यूज करा है कि लाइक वी विल बी गोइंग फॉर एन आउटिंग टुमारो, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये मैसेज कन्वे कर दूं कि टुमारो वी विल बी गोइंग आउट एंड यू ऑल हैव टू कम टू द कॉलेज बाय 10 AM. सो ये मेरा मैसेज प्रॉपर है, मेरा मैसेज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है नहीं, तो ये लास्ट मोमेंट बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. इफ आई से कि हम आउटिंग के लिए नकराली ढानी जा रहे हैं, मेनी ऑफ अस यू विल नॉट अग्री, हमें नहीं जाना नकराली ढानी, हम क्यों जाए, हमें नहीं पसंद. लास्ट मिनट प्रॉब्लम अराइज होती है. सो जो ये लास्ट मिनट प्रॉब्लम्स होती है उसे एलिमिनेट करने के लिए जरूरी है कि ये जो 7 C's है ये आप अपनी कम्युनिकेशन में इंक्लूड करके चले, या आप अपने मैसेज में इंक्लूड करके चले, तो लास्ट मोमेंट जितने भी प्रॉब्लम्स अराइज होंगे वो प्रॉब्लम नहीं होंगे, या फिर बहुत कम लेवल पे होंगे, विच विल इजी टू सॉल्व. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड. थैंक यू. सो दिस इज द 7 C's जो आपकी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने में हेल्प करेंगे, आपके मैसेज को इफेक्टिव बनाने में हेल्प करेंगे. एनी क्वेश्चन, एनी डाउट?
जी देखिए Sir, it's done. आज का सेशन हो गया. okay. I have an announcement for us to make. Ranjana ma'am. एक अनाउंसमेंट है, आपका रेगुलर सेशन सुबह 10:30 बजे चालू होगा, उसके लिंक आपके पास 9:30 बजे तक आ जाएगी. इट इज बीन रिक्वेस्टेड टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स कि अगर वो सेशन डेली अटेंड करेंगे तो ही वो सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल होंगे. आई रिपीट वंस अगेन, जो बंदा या जो पार्टिसिपेंट रेगुलरली अटेंड करेगा, रेगुलरली असाइनमेंट जो मिलेंगे उसको रेगुलरली अटेम्प्ट करेगा, सर्टिफिकेट उसी को इश्यू होगा. और रेगुलर लेक्चर सुबह 10:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा. There will be no delay in the timing. I repeat once again, there will be no delay in the timing. Lecture will start sharp at 10:30 and link will be shared to you all by 9 in the morning. Thank you.